Welcome back once again. Today we will start first class of biology, class 10th. Okay. So see here, chapter is life process. Life processes. जीवन की प्रक्रियाएं। लाइफ प्रोसेस है क्या? उठना, बैठना, चलना, सोना, सब सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेस में आते हैं। मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, these all are belongs by the process of life process. Okay. Life process means the process by which our life can sustain easily. That is called life processes. जीवन की प्रक्रियाएं, ऐसा प्रोसेस जिससे कि हमारा लाइफ यानी हमारा जीवन आसान हो जाता है, जिस प्रोसेस के चलते हमारा जीवन आसान हो जाता है, उसमें तमाम चीज़ें आती हैं। जैसे पहला लाइफ प्रोसेस में नंबर 1 क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषण। न्यूट्रिशन यानी ब्रेकडाउन ऑफ substances and provide energy to our body, either complex form to simple form, either or another form by which we get energy to survive our life. So nutrition means the process. Nutrition means the processes by which we get energy to work properly. टू वर्क प्रॉपरली, सही तरीके से काम करने के लिए। आर इन अदर फॉर्म, दूसरे तरीके और से भी हम कह सकते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल into simple form to get energy called nutrition. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी जटिल चीज़ों को तोड़ करके सिंपल चीज़ में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी को निकालना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है। न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। फर्स्ट
autotrophic nutrition, and second one heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So first we read or learn about autotrophic nutrition. What is autotrophic? Auto means self, means self न्यूट्रिशन. सेल्फ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? यानी पहले की बात करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ये क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब दोज सब्सटेंसेस, यू कैन राइट हियर, दोज organism which can prepare food by own self called autotrophic nutrition. For example, plants are able to prepare food by own self. That's why plants are known as autotroph, and this nutrition is known as autotrophic nutrition. Okay, how plants are able to prepare their food? What will happen for the preparation of food? By the process of photosynthesis, plants can able to prepare food own self by releasing of oxygen. So you can understand photosynthesis you can see here this is the leaf and this is stomata. If you can see stomata in microscope, it looked like this form. This is gourd cell and dotted line are chloroplast. Okay, so by the process of photosynthesis, you can write formula of photosynthesis. 6CO2 plus 6H2O H2O. So it can form C6H12O6 plus 6O2. Means in the process of photosynthesis, when carbon dioxide and water react together, then form glucose,
glucose and oxygen will release in highly amount. Okay, so by the process of photosynthesis, plants are able to prepare food on self. That's why plants are known as autotrophs, and this process of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition. Okay, thank you. Remember that, like and subscribe.